Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Devaki Nandanaya cha Nandagopakumaraya Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, आप सबका स्वागत है. You are welcome for continuity of our vaibhava study, first canto, 6th chapter, perfection of Narad Rishi, or the conversation between Vedavyas and Devrishi Narada. So we have discussed what is Sadharma Precha. We discussed in verse number 3, Sadharma Precha. What do you understand by Sadharma Precha? Sadharma Precha means the disciple wants to know the realization and the method to realize the Supreme Lord. Yes, Sadharma Pracha is one of the questions in your close assessment. What is Sadharma Pracha? So, you should write all these answers in your copies. What is Sadharma Pracha? Transcendental inquiries by a sincere seeker of the absolute truth as a disciple from a spiritual master. And at this study we discussed life. Sanatana Goswami inquired from Chaitanya Mahaprabhu. These are the transcendental inquiries. And in Bhagavad Gita, Chaitanya Prabhupada, Pariprashmena Sadharma Precha. So this is important aspect for a disciple to learn from the spiritual master the personal realization of the spiritual master. Because that will be the example for him to practice and perfect his life also. List Vyasadev's question to Narada. Yesterday, first 4 verses, particularly 3 verses, have certain questions which Vyasadev asked from Devrishi Narada. What are those questions? Number 1. Yes? How did Narada Muni achieve this transcendental body after? There is it's also the question, this is one of the question that how Narada Muni got the spiritual body. Okay. What did he do after initiation? When the Bhakti Vedanta left, what did he do? The first question. Second question? How did he pass your life after initiation? The second question. How he passed his life after initiation. Okay, 3. How he remembered past life? How he remembered his past body of the last kalp of Brahma.
Because it's not possible to remain time destroy everything. And this much or something else. How you get the confidence? So you have to write this. Open book, read, write these answer 3. When did Sri Narad Muni meet with the Bhakti Vedanta? This is not in 6th chapter. When did Narad Muni meet with Bhakti Vedanta? It says I am 4. What does I am means? 1 mark. 1 mark, okay. 4 means in verse number 4. Chaturmasya, actually it says the Chaturmasya, during the 4-month of rainy season. Why is the duty of Parivarjik Acharya wanting medicant to travel alone? Why? So that he can develop faith on God and he can fix his mind. He can have faith in God, he can strengthen his mind too, and Enlighten the inhabitants. enlighten the people living here. 3 things, right? 2 for his personal benefit, 1 for the benefiting other people. Okay. What was Narad's material tent? 4-mark question. Huh? What was Narad's material tent? See? Yeah, he was searching Lord in the forest, which is mode of goodness, and Lord is beyond 3 mode of material nature. It means still he was under the influence of material mode of goodness. But the marks are 4, so this much is not enough. Sadhak Day, his realization was in a sadhak day, in which only once Lord shows himself, just to increase his eagerness and hankering to see him more. And when he will have a siddha day, then he can have a continuous darshan of the Lord. And then you have to write that note also, which we have extracted from Vishwanath Chakravarti Thakur. Actually, Narad was at the stage of prema bhakti, so there is no any material form. But his love was in a sadhak day, which was immature stage. So it has to mature in a siddha day. So Lord has only made him humble and increased his hankering to have the service of the Lord more. Now next question is very similar. 1 mark. Why did the Lord withdraw himself from the vision of Narad? Increase his desire. 1 mark question. Huh? To increase his hankering. To increase his eagerness to have Lord more and more. Because the service of the Lord is increasing step by step, it's never satiated, it never ends. So Lord wants actually that the devotee should develop more hankering to have his darshan and service. Okay, explain how was Sri Narad Muni, how, this is a little 2 words not necessary. Explain how Sri Narad Muni was able to remember his previous life. How Narad Muni was able to remember his previous life. By the mercy of the Supreme Lord, as explained in the verse number 24. But to explain it more, this is 3-mark question, so this is not enough. Srila Prabhupada's purport on this verse number 4. The spirit soul is eternal.
Consciousness is also eternal because it is a symptom of the soul. Material body is temporary and is destroyed. This is the purpose says a philosophical principle. Then, when consciousness is perceived through material body, that is inferior, polluted consciousness, that is destroyed when the body is destroyed. But when consciousness is purified, it means one who goes beyond three modes of material nature and is established in pure love of God. Bhagavad Bhakti के प्रेम के स्तर पे जो हो जाता है, then his consciousness becomes super consciousness, and then he has a super mind, and that is not destroyed by time or the destruction of the body. This is explained in the purport by Srila Prabhupada in verse 4. In verse 24, because his mind is focused on Supreme Lord, who is eternal, therefore his meditation is eternal. And therefore by Lord's mercy, Lord told Narad that you will remember me, the creation and annihilation will not destroy your memory. So you join the both verses and answer this. The principle is soul and super soul are eternal. If one is, he purify himself as a soul, then his consciousness will be eternal as a super consciousness. If he apply his mind to the Supreme Lord is eternal, then he also becomes eternal in his remembrance. So how it is eternal? Because soul and super soul are eternal. And when he applies to these both purely, then the memory will be eternal. What is considered to be an odd or difficult moment in a mundane sense is accepted as the special mercy of the Lord. Explain this statement with reference to the previous life of Sri Narad Muni. Death of his mother. Yes. He was the only child of a mother, and mother was very affectionate and wanted to take care of Narad, but somehow by the providence or by the kala chodita, by the time, influence of time, his mother was bitten by a snake and she left her body, and Narad said, Anugrahami, God has actually bestowed mercy on me, because now I have no bondage, I am free. I can practice devotional service as I was initiated by the saintly people, and I can go now from here. So even without doing the last rites of the mother, he left. So the difficulties in material world are not deviating the pure devotee from devotional path. They think it as an opportunity and a positive way. Give evidence from the section of Srimad Bhagavatam to substantiate the fact that in previous, present and next creation, activities will remain as they are. Yeah, Narad, when he was traveling, he was going through the capital cities, Pura, Grama, then Kheta, Kharvata, Varna. These are, if you write the original name from the words, that will be like, you understand the system. And then you write, Prabhupada writes, this was before, when Narad was traveling, this is now also, and it is going to be a next life of a Brahma also. Therefore, to waste time in archaeological research is useless. Better that time should be utilized for
vital needs of the human life. This is the Srila Prabhupada's purport. Okay. Briefly describe Narad's experience during meditation. Tears roll down from his eyes. Huh? Tears roll down from his eyes. Yes. So, symptom of Ashta Sattvaka Bhava, tears was the one thing. What else? From eyes, from ear, he could taste. He realized the Supreme Lord step by step, first in the heart, then in the three functions of the mind, nose, ears and eyes. It means he can smell the fragrance of the light, the ankle bell of the Lord and see the beauty of the Lord. And then standing. Then his body was in ecstasy due to the development of the bhava bhakti, and his eyes was full of tears and goose on the body, so overjoyed that he became unconscious, layer, and he could not see himself or the Lord. This is the last symptom of the Ashta Sattvika Bhava. Explain the following statement. That personality of God is what not seen, but only heard, does not make any difference. There was one word. Used for the Lord, which means his breathing. The Vedas are coming from his breathing. Bhagavad Gita is coming from his lotus mouth. So the words of the Lord and Lord are not non-different. So seeing Lord or hearing Lord are this one and same. There is no difference. So Nard was not able to see Lord by any mechanical means, and then he heard the Lord. And that was as good as seeing Lord. Because there is no difference between the word of Lord and Lord himself. This is what Prabhupada's purport is. Particularly then he says Bhagavad Gita also. So this verse is 25. This verse is 25. So look at 25 verse and find exact. Yeah. Now there are two more questions left which we will discuss now. Now we have already discussed this. Question number 6. The same thing, 6 questions there, 6 questions here. Doesn't say 12. Describe Nard's transcendental body and activities as mentioned in verse number 27 and 8. What is the significance of Nard's spiritual body? One thing is present, three things are present, one is absent. Remember we discussed yesterday? Yes. It is eternal. This body is eternal, number 1. Number 2, free from 3 modes of material nature. Number 3, free from reaction of productive activities. Karma se mukta, 3. And what is the one which is not affected, no affinity for material, no material affinity. Then what is the next question? With this same. And activities as mentioned. And what are the activities in the spiritual body? Shravanti, gayanti, ananta, namani. This is the verse. Unlimited names of the Lord. He was singing. Guhyani. This verse, find out this, I think this verse is 28. What's verse find out? Take the verse 28 once. 28, verse number 28. The same verse? Oh, 28 verse means he simultaneously left the material body and got the spiritual body. And he got his Shuddha Deha, which has 3 qualities.
which we just discussed. And what's Evam Krishna Mate Brahma. So you remember this, but this is also what his activities afterwards. Check on करेगा. That's not actually what he was doing afterwards. Devdatam Vinan after that. That will be right. So sometimes Where is that verse? Which is that verse? He had one question. Oh, this was before getting the spiritual body. He was practicing this after hearing from Lord. This is not in this. Namani anantasya hatrapta pathan. This was before getting spiritual body. After getting spiritual body, the four things we discussed, and then simultaneously he left the material body and got the spiritual body without undergoing any change. Immediately, like two lightning and illumination simultaneously. Tarta Sudama, right. Okay. So, and the last is explain the transcendental nature of Sri Nath Muni as described in verse number 31. Also we have done this. Transcendental nature of Nath Muni. Travel without restriction. Bina. This is important in one way, particularly reference to the other rishi like Karma Kand rishi like Karma Yogi rishis, they cannot enter the spiritual world. The Jnanis like Sanakadi, they cannot come to material world. But Nath can go both places because he is transcendental to both the gyaan and karma. So he is at a level of pure bhakti. So particularly this part is important and comparative. Okay, 31. Narsingha Puran. This is a quote from Narsingha Puran. You have to add this one line as is stated in Narsingha Puran. Narad is different from the other Angira Adi rishis and four Kumaras. Marichi, sorry, rishi is not Angira, it's a Marichi, rishi is Marichi. Okay? So Srila Prabhupada is giving more description like material world and spiritual world. 3 words. Madhya is the Urdha, Madhya, and Adho. And then Nath can travel anywhere. Okay, now we have to finish this chapter today. There is no question after this. We were in verse number 30 yesterday and verse 33. Pragayanta swaviryani tirath par priya sharvaha adhbhut evam me shigharam darshanam yati chetasi. So now this glorifying Lord and Bhakti. Now is glorifying Supreme Absolute Sri Krishna and his Bhakti. Pragayantaha. Pragayataha. Pragayata means completely engaged in singing. Par means prakarshya and Ruke means fully. Swaviryani. The power of the Supreme Lord. Tirath par. Wherever Lord goes, that place becomes holy. Priya Sharvaha, it's very dear to hear. It's very dear for us to hear the glories of the Lord. And Lord is also attracted to His glory. Wherever His glories are sung, Lord is also attracted there. Adhbhutta. And then He appears there as if somebody is invited, but He comes on His own.
So we have discussed this Jiva Goswami's note, if you remember. That Lord is attracted not for his own glorification, but to give mercy to those devotees who sing his glories. This is Jiva Goswami's comment is important. Now we have to read Srila Prabhupada's purport for today. We are starting chapter 6 where we left yesterday. Okay? So we have revised what we have done yesterday and all the closed book assessment question we have discussed. Now you take time sometime to write on this in your copy. That before exam you can quickly refer it. At that time you will not find these answers quickly, better write this. Okay? Now Srila Prabhupada writes, the absolute personal God is not different from his transcendent name, form, pastime and sound vibration thereof. Nam nami abhina. As soon as the pure devotee engages himself in pure devotional service of hearing, chanting and remembering the name, fame and activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the Lord. Pure devotees by reflecting himself on the mirror of his heart by spiritual television. Now when I finish this purport, you have to quote some verse, which Srila Prabhupada is actually in his mind thinking when he is writing this purport, okay? So you guess that. Therefore a pure devotee who is related with Lord in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. It is a natural cycle. Now, till this, now is a different topic. Any verses coming in your mind? Premanjanacharita bhakti vilochanena. This is the whole paraphrase of that verse. Can you see this? The saintly person, if they have a love, they can see Lord within the heart. This is what Srila Prabhupada has written. You can see. Now Prabhupada is writing the Priya Sharvaha. Now he is writing the purport on Priya Sharvaha. What is that? It is a natural psychology in every individual case that a person likes to hear and enjoy his personal glories enumerated by others. There is a natural instinct, and Lord is being also an individual personally like others is not an exception to this psychology. Because psychological characteristics visible in the individual soul are but a reflection of the same psychology in the Supreme Lord. The only difference is that Lord is greatest personality of all and absolute in all his affairs. If therefore Lord is attracted by pure devotees chanting of his glories, there is nothing astonishing. Since he is absolute, he can appear himself in picture of his glorification. The two things being identical. ये क्या लिखा है? क्या लिखा देखो? पहले प्रभुपाद ने जो लिखा है कि हर एक आदमी अपनी महिमा सुनना चाहता है, तो भगवान भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि भगवान सुनना चाहते हैं इसलिए कि how we came from him. So जो हमारे अंदर है वो उसमें है. ये है साइकोलॉजी. फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, but he is absolute. Since he is absolute, he can appear himself in the picture of his glorification. इसका क्या मतलब? क्या लिखा प्रभुपाद ने? He can come in the picture of his glorification. The two things being identical. Means whenever we glorify Krishna, or wherever there is a discussion about Lord Krishna, Krishna personally appears. इसको जैसे हम कहते हैं पिक्चर में कैसे आप आ गए, यानी in that picture he appeared. This meaning. Then it says what actually it means is when we discuss Krishna, it means we are chanting the name of Krishna, which is not different than Krishna. It means Krishna is there. Actually, this is the meaning, because it says there is no difference between the
The next line says, he comes in a picture of his glorification, the two things being identical. So his name and he are not different. So if we glorify his name, he is present there. Because he is absolute. Srila Narada chants the glories of the Lord not for his personal benefit, but because the glorification are identical with the Lord. Narad Muni penetrated into the presence of the Lord by the transcendental chanting, not for his personal benefit, but to please Lord. Why we are chanting Hare Krishna? Krishna Priti Artha, just to please Krishna. And Jiva Goswami's quote also still you remember. Lord appears where the devotee chant. हमने कल इसके ऊपर कुछ श्लोक कहे थे, याद है किसी को? दो तो कम से कम हमने कल डिस्कस किए थे. Sorry? First canto, first chapter, second chapter. हृदय अवरोध हृदय तत्क्षणात्, इसके ऊपर डिस्कस किया था. एक और यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां निर्देशो वा यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद. भगवान कहते हैं मैं वहां ने वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों को ढूंढने के लिए हिमालय में नहीं हूँ, मैं जहाँ कहते हैं भक्त मेरे वहां हूँ. I am where my devotees are chanting. कोई एग्जाम्पल कहीं चैंटिंग किया और भगवान आ गया हो? द्रौपदी. Yashoda was chanting the glories of Lord while churning. Krishna was sleeping in a cave there. Krishna disappeared. Gopi was singing Gopi Geet and Krishna appeared among them. कहते हैं जहाँ मेरा गुण गाओगे मैं वहाँ आ जाऊँगा. So he appeared in these two places. Yes. Srivas Pandit's disappearance today. Huh? Srivas Pandit, he was chanting Narsim Stottra and Lord appeared in Narsim mode. Srivas. Yeah. Srivas was chanting Narsim mantra and Narsimha appeared. Lord Chaitanya appeared in the Narsimha form of Narsimha Deva. That is, when whichever form you want, God will come. पानीहट्टी में कीर्तन में यहाँ एक प्रिंसिपल, और पानीहट्टी कहते हैं तो एक प्रिंसिपल आता है. चैतन्य महाप्रभु is always present at 3 places, 4 places. कौन से? श्रीवास आंगन, क्योंकि कीर्तन होता है. नित्यानंद नर्तन, वो भी कीर्तन. सची रंधन, सची माता प्रेम से पकाती है. राघव झालन, वो उसकी बहन दमयंती 12 महीने के लिए सूखा सब प्रसाद भेजती थी, छोटे छोटे थैली बड़े बोरे में, वो झालन झोला. तो 4 जगह चैतन्य महाप्रभु हमेशा होते हैं, पर्टिकुलरली कीर्तन. तो ये एग्जाम्पल वी रीड दिस इमीडिएटली, कुछ एग्जाम्पल आएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं. देन विल नेवर फॉरगेट कि ऐसे गाते हैं वहां भगवान आ जाते हैं. Okay, we are going to verse number 34. Etadadhyaturachittanam matra sprashicchayamo bhavasindhu palavo drishto haricharyam varnam. This is not the drishto, it is my experience. Narad saying, this is my experience. Don't now again do any experience, I have already done. Drishto means experience. Bhava Sindhu Palva, the boat to cross the material ocean. This is my experience. To cross this material ocean, there is only one thing. What is that? Hari Charitra Anuvarnanam. Anuvarnanam means follow and footstep of previous acharya. Anu means to follow.
describe the pastime of Lord as you have heard from your previous acharya. किसके लिए? किसके लिए? एतद् ही आतुर चित्तानां मात्र स्पर्श इच्छयामो. Those who are interested in sense gratification. For them I only know one thing from my experience. To cross over the material ocean, the only boat is chanting the pastime of Lord. Now see the translation. It is personally experienced by me, Narada saying, Drishta, that those who are always full of cares and anxiety due to desiring contact or senses, Atur Chittanam, Atur means anxiety, Atur Chittanam, Matra Sparshas means sense enjoyment. With their object can cross the ocean of nations on a most suitable boat, Bhava Sindhu Pal. Constant chanting of transcendental activities of Supreme Personality Godhead. So here Prabhupada is taking Anu means constant. Anu has three meanings: to follow, continuously also. But Anu always, wherever you find Anu, it means parampara. Means following in footstep of previous acharyas. Chakravarti writes, for persons whose minds are constantly afflicted by desire for the enjoyment of sense objects, Atur Chittana. I have directly experienced that singing the glories of Lord is the boat for crossing material existence. This verse summarizes the topic being discussed. For those whose minds are afflicted by the desire for enjoyment, expression of the sense object matra, which is an ocean, the boat, Bhavasindhu Palva. For crossing that ocean is praising the Lord's activities. I have directly seen, experienced that, Drishta. There is no proof necessary, because Kirtan is the main ang out of many angas of the bhakti. How many types of Kirtan you know? Yes? Nam Kirtan, Guna Kirtan, Leela Kirtan, and etc. Bhakti Rasamaya Sindhu, Kirtan is of three types and also etc. Nam Kirtan, Guna Kirtan, Leela Kirtan, three have quote from Bhagavad and Bhakti Rasamaya Sindhu. And then Dham Kirtan, the Kirtan about the Vrindavan, Dham Kirtan. Guna, Roop Kirtan, Leela Kirtan, Nam Kirtan. So here, Anucharit. So, Vishwanath Thakur is saying, not only Kirtan, Kirtan is most important, but all other angas of bhakti can be effective. Shravan can be effective also. All nine can be effective. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada's purport is like that. Chit Srila Prabhupada is taking as a mind. Now Srila Prabhupada is discussing function of the mind. And then he is giving two options. Either you engage the function of mind in the material activities, or you engage the function of mind in the spiritual activities. So this is the whole purport of Prabhupada, is first on Atur Chittana. Chit means mind. Now see, the symptom of living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something, talking about something. Generally the materialistic men think and discuss about the objects which satisfy their senses. So thinking, willing, feeling is function of mind. But as these things are exercised under the influence of external illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with the cares and anxiety, Ato Chittana. This is called Maya, or what is not. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object of
satisfaction. So Narada Muni, by his personal experience, said that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratitude is to chant always the activities of the heart. The point is that subject matter only should be changed. You cannot stop thinking, willing, feeling, chanting, talking, that you cannot stop. But now you have to only change the subject of your activities. Generally, body, mind and words are the faculties to practice devotional service. And these are the same faculties to do the sense-grained enjoyment also. So, Bhakti Rasamrita Sindhu में प्रभुपाद जी mental culture of Krishna consciousness किसको कहते हैं? Mental culture of Krishna consciousness. प्रभुपाद कहते हैं now mind is thinking of something worldly things, but we have to develop mental culture of Krishna consciousness. Bhakti Rasamrita Sindhu में ये लिखा है. बताइए mental culture of Krishna consciousness क्या है? Mind should be thinking about Krishna. Mind should be involved on the activities of Krishna. So where are the activities of Krishna? The activities of Krishna in some place. Vrindavan and there Prabhupada writes, mental culture of Krishna consciousness to always think of activities of Krishna in Kurukshetra and Vrindavan, which means Bhagavad Gita and Bhagavatam. वहाँ प्रभुपाद ने ये लिखा है आप पढ़ भक्ति रसामृत सिंधु में. तो यहाँ वही बात प्रभुपाद लिखते हैं. We have to change the object of our activity. The point is that the subject matter only should be changed. No one can change the thinking activities of living being, nor the feeling, nor willing or working process. ये सब मन की बात है. मन का function है thinking, willing, feeling, mind, function of mind. So चित्त को प्रभुपाद ने mind समझा है, लिया है और उसके function की बात कर रहे हैं. अब प्रभुपाद दो एग्जाम्पल दे रहे हैं. But if one wants actually happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking the politics of dying men, one might discuss the politics administered by Lord Krishna himself. ये इसका मतलब क्या? Politics of dying men मतलब न्यूज़पेपर में रोज क्या यहाँ के राजनेता कह रहे हैं. दिस इज डाइंग मैन मतलब जो कल मरने वाले हैं उनकी राजनीति के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो पेपर पढ़ने. तो क्या पढ़े? महाभारत पढ़ो, कृष्ण की पॉलिटिक्स. इसका अर्थ है यू स्टडी कृष्ण पॉलिटिक्स व्हिच ही एडमिनिस्टर्ड. महाभारत में सारे कृष्ण की पॉलिटिक्स है. आपको पॉलिटिक्स ही पढ़नी है तो डाइंग मैन की मत पढ़ो, कृष्ण की पढ़ लो. लिखा है सीधा ना. Administered by himself. Instead of relishing the acting as cinema artist, better turn your attention to activities of Lord with his eternal associate like gopis and Lakshmis. अभी फिल्म हीरो हीरोइन की बात करो उससे अच्छा है राधा कृष्ण की बात करो, लक्ष्मी नारायण की लीला की बात करो. प्रभुपाद का सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है, काम तो वही है. So he's giving two examples. और आगे भी कह रहे हैं The Almighty Person guarded by His causeless mercy descend on the earth and manifest activities almost on the line of the worldly men, but at the same time extraordinarily because He is Almighty. लगता ऐसे है कि आम जैसे लोग हैं ऐसे because He attracts, He wants to attract us, so He has activities similar to that. तो but they are not similar. He does so for the benefit of conditioned souls, so that they can turn their attention to transcendence.
By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all miseries. This is stated from the personal experience by such an authority as Srila Muni. And we can have the same experience also if we begin to follow the footsteps of great sage, the dearmost devotee of the Lord. So, इस purpose से क्या लेना चाहिए? We cannot stop our all activities of the mind. Simply, we have to change the subject. Material subject को छोड़ के spiritual subject को लेना. Now this is the comparison of the other processes to bhakti. Yamadi yoga pathahi kama lobhato moho mukanda sevaya adhbhut tatha atma adhyan shamay. It is true that by practicing restraint of senses by yoga, system, yama, name, one can get relief from disturbance of desires and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead. The Atma constantly afflicted by lust and greed will not be satisfied by Ashtanga Yoga. चक्रवर्ती सीधा लिखते हैं, अष्टांग योग से आत्मा संतुष्ट नहीं होगा. And other paths also, as much as direct service to the Mukunda. चक्रवर्ती पाठ का पर्पस थोड़ा बड़ा है, लेकिन मोस्टली आप जानते हैं ये, और अच्छा है एक बार इसको समझना. Though it is ascertained that the state of bhakti is real liberation, the yoga and gyaan mixed with bhakti will not pacify Atma as much as pure bhakti. Atma is not pacified by yoga pati, as much as by serving Mukunda directly Adha. It is established that the yoga and other processes without bhakti are futile. और दो श्लोक कोट किए ब्रह्मा जी की स्तुति के. पुरेह भूमन बहवोऽपि योगिनस्त्वद्दः अर्पितः निज कर्म लब्ध्या विबुद्ध्यः भक्त्या एव कठोपतीयः प्रपद्येहि अंजो अच्युतते गतिं पराम्. Almighty Lord, in the past many yogis in this world achieved the platform of devotional service by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duties. Though such devotional service perfected by the process of hearing and chanting about you, they came to understand you, O Fallible One, and could easily surrender to you and achieve such your supreme abode. Now this is the other one. नैष्करम् अप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ध्यानम् अलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत भद्रम् ईश्वरं चार्पितं कर्म यत् अकारणम्. Even the gyaan without bondage of karma is not glorious if it is devoid of bhakti to the Supreme Lord. What is the use of having destroyed ignorance? What then to speak of sakam karma, which cause suffering both during practice and at the stage of perfection, and nishkam karma when not offered to the Lord? So other methods are not satisfying Atma. तो आत्मा satisfied भक्ति से होती है, कहाँ लिखा है? हाँ, ये आत्मा सुप्रसिद्ध है. श्लोक पूरा पढ़ो. सवै पुंसाम परम धर्मो यतो भक्ति अदोक्षते अहितुक्ति अप्रत्ययता येन आत्मा सुप्रसिद्ध. तो आपको इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए ये श्लोक कि ये नहीं करते हैं, वो करता है. अब आगे चक्रवर्ती पाद देखते हैं, मुझे ख्याल आपको पढ़ा है कई बार भक्ति शास्त्री में. Therefore this verse must only refer to yoga and other process mixed with bhakti.
since they otherwise would give no result at all. And even these processes pacify the Atma to some extent, they do not pacify it to the extent that pure bhakti alone. Serving Mukunda without this process does. These mixed processes will not satisfy Atma completely. This is the verse in first canto, 5th chapter, number 8. Narad was instructing this to Vyasdev. पढ़ के आए आप. भवता अनुदिता प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नैवा असौ न तुष्येत मन्य अददर्शन अखिलम. So Khilam, you have not sufficiently described the glories of the spotless Lord Krishna because your mind could never be satisfied with Vedanta. I think that writing Vedanta Sutra is insufficient. ये हम पहला चैप्टर पर 5th चैप्टर का श्लोक है. अब ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति की. आप जानते हैं, फिर भी दोबारा देख लीजिए. Bhakti is described later as the means of liberation. 3 types bhaktis are seen. Pure bhakti called kevala. Mixed bhakti with bhakti being predominant called pradhani bhuta bhakti. And mixed bhakti with bhakti being secondary guni bhuta bhakti. Guni bhav. अब आप डिसाइड, आप जानते हैं इसको भक्ति का 2 टाइप पहले, प्योर एंड मिक्स्ड. प्योर के भी 3-4 नाम है. अनन्य, केवला, शुद्ध, अकिंचन, अव्यभिचारिणी. ये है शुद्ध भक्ति. मिक्स भक्ति 2 टाइप की है. कौन सी? मिक्स भक्ति 2 टाइप की है, प्रधानी भूता और गुणी भूता. देखो यहां लिखा है प्रधानी भूता का मतलब भक्ति प्रोमिनेंट है 80%, 20% और कुछ है. तो प्रधानी भूता भक्ति और गुणी भूता में क्या है? और कुछ 80% है, भक्ति 20%. अब समझे? अब प्रधानी भूता भक्ति 3 प्रकार की है. भक्ति मिक्स विद ज्ञान, भक्ति मिक्स विद योग, भक्ति मिक्स विद कर्म. ये जो प्रधानी भक्ति है ये मुक्ति दिला सकती है. गुणी भक्ति भी 3 प्रकार की है, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र. लेकिन उसमें कुछ नहीं दिला सकते, सिर्फ उनका फल दिला सकती है. कर्म का फल, योग का फल और ज्ञान का फल, और इससे आगे कुछ नहीं. वो नाम की भक्ति है, वैसे है नहीं भक्ति वो. ये 2 किस्म समझ में आया? अब इसको थोड़ा और पढ़िए, फिर हम और क्लियर हो जाएगा. केवला भक्ति इज इंस्टेड इन वर्स सच एज. केवला भक्ति का एग्जाम्पल दे रहे हैं. केवला भक्ति कहाँ है? त्यक्त्वा स्वधर्मम धर्म, ये है केवला भक्ति. और ये भी केवला भक्ति, अहम पुरा अतीत भव. अब प्राधान्य भक्ति इज इंस्टेटेड एज फॉलोस. प्राधान्य भक्ति का मतलब जिसमें भक्ति ज्यादा है और कर्म, ज्ञान या योग कम है. कुर्वाणा यत कर्माणि भगवत चिकित्सा सकृत गणन्ति गुण नामानि कृष्णस्या अनुस्मरन्ति च. When those engage in karma continuously perform those activities according to the instruction of Lord, they also chant and remember the qualities and names of the Lord. 1:5:36. आप करके आए हैं. ये है प्रधानी भूता. किसके साथ? कर्म के साथ मिश्रित भक्ति. कर्म लिखा है ना. गुण भाव भक्ति और गुणी भाव भक्ति, इसका मतलब जिसमें भक्ति बहुत कम है. उसका श्लोक है यद अत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ध्यानम यत् अधितम ही भक्ति योग समन्वितम.
That gyaan which arises from karma, which is pleasing to Lord because of being offered to him as endowed with bhakti. इसका मतलब भक्ति ने सिर्फ ज्ञान का ही फल दिया, जो भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति है वो नहीं मिला। अब और लिखा है, केवल भक्ति practiced by a person who is निष्काम, also called a अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति, अकिंचन भक्ति। इसका रिजल्ट क्या है? गिव्स प्रेम। दिस भक्ति गिव्स प्रेम एज ए रिजल्ट। अब दूसरा प्राधान्य भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति भी इसको कहते हैं। प्रधान्य भक्ति क्या देगी? क्लासिफाइड एज कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति। ये कहां है? भगवद गीता में है, 7वें अध्याय में है कर्म मिश्रित, तो ज्ञान मिश्रित, 8वें में है योग मिश्रित। कौन सा श्लोक? चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परसु। इसमें ये कर्म मिश्रित भक्त कौन से हैं? आर्तो, ज्ञान मिश्रित ज्ञानी, और 8वें अध्याय में योग मिश्रित भक्ति है, वो प्रधानीभूता। ये तीनों दोनों अध्याय में ये भक्तियां हैं, ठीक है। अब योग मिश्र भक्ति क्या देती है? देखो, एंड प्रैक्टिस बाय दोज हु आर शांत, ये शांत भाव वाले इसका अध्ययन करते हैं। इसका मतलब दास्य भाव तक नहीं है, शांत भाव तक ये आपको ले जाएगी ज्यादा से ज्यादा। शांत भाव, दिस लेवल ऑफ मिक्स भक्ति, प्रधानभूत मिक्स भक्ति, वी कैन रीच टू द लेवल ऑफ शांत भाव। और शांत भाव रहती एंड लिबरेशन फॉर सम, किसी किसी को मुक्ति मिल सकती है। If one of these person get the association of a person with दास्य भाव, अब ये मिक्स किसी का संग कर ले जिसका दास्य भाव है, तो उसको दास्य भक्ति मिल सकती है। Desiring dasya and other sentiments, that person will achieve the prem from the dasya or other bhav. Parantu, that will be, prem will be with reverence, aishwarya, vedic। इसका मतलब ये सारे मिक्स भक्ति वाले या तो दास्य भाव को प्राप्त करते हैं, अगर कोई शांत भाव को प्राप्त करते हैं सब, और कोई दास्य भाव के भक्त के संग में आएगा तो दास्य भाव मिलेगा, लेकिन ऐश्वर्य वाला, माधुर्य वाला नहीं, रिजल्ट ऑफ वैदिक साधन भक्ति वाला। ये है इनका डिफरेंस। इन गुणी भाव भक्ति का मतलब भक्ति नाम की है, कर्म ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है या योग ज्यादा है, तो उसका क्या होगा? डज नॉट रिवील इट्स ओन रिजल्ट एंड नेम। इसका मतलब वो न शांत भाव देगी, न मुक्ति देगी, न कोई भक्ति का कोई फल नहीं देगी, सिर्फ कर्म का फल देगी, स्वर्ग। ज्ञान का फल देगी, ब्रह्म में जाए तो जाए, योग का फल देगी, सिद्धियां असिद्धियां। वो सिर्फ वही काम करेगी जिसके लिए वो कर रहे हैं भक्ति, बिकॉज भक्ति कैन ओनली गिव रिजल्ट, दे कैन नॉट गिव रिजल्ट ऑन देयर ओन। वो इतना ही देगी भक्ति। In Guni Bhav Bhakti, Bhakti does not reveal its own result and name. It is only an assistant to Karma, Gyaan and Yoga, which cannot produce result without Bhakti's presence. Bhakti in this case is only secondary, Tarisha. Bhakti Mishra Karma, Bhakti Mishra Gyaan and Bhakti Mishra Yoga produce liberation. और जैसे आपको कहा पहले शांत भाव तक मुक्ति देंगे। Thus in this scripture, only two type of bhakti are accepted, केवला and प्रधाना भूति। इन दो कोई भक्ति कहते हैं, तीसरी भक्ति है ही नहीं। वो भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि नहीं तो कर्म का फल भी नहीं मिलेगा, ज्ञान का भी नहीं मिलेगा, योग का भी नहीं मिलेगा। भक्ति उसमें समझो कि उसी के फल देने के लिए सहायक है, बस उसको भक्ति नहीं कही जाती।
All this Narada instructed to Vyas, who explained this in the 12th canto. सारी लिखा तो ऐसा पड़ा ऐश्वर्य मतलब दास्य तक बस वो दास्य मतलब वैकुंठ में ऐश्वर्य हाँ वैकुंठ जा सकता है भक्ति सामने सिंधु में भी इसका डिस्कशन है बहुत बड़ा वैकुंठ तक जा सकता है क्योंकि ऐश्वर्य वैकुंठ में है राइट ये बहरहाल सब्जेक्ट मैटर तो मैं परपट चक्रवर्ती बात का पढ़ रहे हैं थोड़ा इंसाइट है भक्ति की क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए भक्ति रसायन ये पढ़ाते भक्ति शास्त्री में है लेकिन आपके लिए रिवाइज हो गया अब प्रभुपाद का परपट योग में कंट्रोल प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं योग aim at controlling the senses by practice of mystic process of body exercise in sitting thinking feeling willing इसका मतलब क्या है माइंड योगा के लिए इंस्ट्रूमेंट है माइंड योगा माइंड से होता है चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते योग किसको कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध करना माइंड का वांडरिंग को बंद करना बस यही है मैकेनिकल चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते ये पतंजलि की डेफिनेशन है योग की चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते अब क्या लिखा है The senses are considered like venomous serpents and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narada Muni recommend another method for controlling the senses in the transcendental loving service of the Mukunda, the personal God. By this, his experience, he said that devotional service plan is more effective and practical than system of artificially controlling the senses. In the service of the Lord Mukunda, the senses are transcendently engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense gratification. The sense wants some engagement. To check them artificially is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such incidents in history, just like Vishwamitra. He was controlling senses, but he was allured by America. On the other hand, Haridas Thakur, engaging senses in the service of the Mukunda, was not influenced by Maya. Okay. The whole idea is that without devotion service to Lord, neither the yoga system nor drive philosophical restriction can ever become successful. ये नाथ का कंक्लूजन है एक्सपीरियंस है नाथ का नाथ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस गिविंग दिस कंक्लूजन अदर सिस्टम्स नेवर सेटिस्फाई द सोल इट मींस दे आर नॉट सक्सेसफुल प्योर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विदाउट बीइंग tinged with fruitive work mystic yoga and spiritual philosophy which means unmixed bhakti is foremost procedure to attain salvation such pure devotional service transcends to nature in nature and the system of yoga and gyaan are subordinate to such process. इसका मतलब क्या है? बोलिए जरा ये लाइन पढ़िए. कौन सी लाइन? Such pure devotional service transcends to nature in nature. And the system of yoga and gyaan are subordinated to such process. मतलब क्या? They are subordinate to nature. भक्ति नेचर से परे है और वो नेचर के अंदर इसका मतलब क्या? तीनों गुणों से परे है और ये जो ज्ञान और कर्म है वो दोनों के अधीन है. ज्ञान सतोगुण में होता है. इसका मतलब ज्ञान तो गुणों के अंतर आ गया ना. तो ज्ञान सतोगुण में है, योग भी सतोगुण में है, कर्म रजोगुण में है. तो वो तो भक्ति केवल तीनों गुणों से परे है. इसका अर्थ ये. ठीक है?
Nature means three modes of material nature. When the transcendental devotional service mixed with a subordinate process, which means gyaan, karma and yoga, it is no longer transcendental but is called mixed devotional service. Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam, which gradually developed all the different system of transcendental version in the text. वो उसने लिखा है 12वें स्कंद में, वो यहाँ ऐसे लिखा है. Now verse 36. सर्वं तदिदं आख्यातं यत् पृष्टो अहं तद् अनघ जन्मकर्म रहस्यं मे भवतश्च आत्मतोषणम्. अब नारद जी कहते हैं, ओ व्यासदेव, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सिंस. कौन सा वर्ड है? Anand. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. Bhavatas cha atmatoshanam. ये आपकी संतुष्टि के लिए मैंने बताया. ये सर्व की परिभाषा क्या है? सर्वम का मतलब क्या है? तात्पर्य है सर्वम के ऊपर लिखा है चक्रवर्ती पाद में. Sarvam here refers to appearance of Lord's bhakti. Its type, Shuddha, growth of the bhakti to the level of prema and result of that bhakti. The activities of a devotee, the Lord was singing, that is the activity of him after attaining bhakti. Then destruction of prarabdha karma. Prarabdha karma means giving the material body. How the devotee leaves his body, achieving a spiritual body, as not achieving the spiritual body without karma, which means pure. It is called secret rahasya because it is not understood by those who study Vedanta. ये वेदांत वालों के लिए ये भक्ति वालों को अनुभव होता है. So सर्वम की ये परिभाषा है. Now, Srila Prabhupada put the process of devotional service from the beginning to the stage of transcendence are all been duly explained to satisfy the inquiries of Vyasadeva. Narad has explained how the seed of devotional service was shown by the Transcendental Association. ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ इसको, आप सुनिए, बताइएगा क्या है, ये कहाँ से लिया है प्रभुपाद ने. ठीक है? Meditate. The seed of devotional service was shown by Transcendental Association and how they gradually developed by hearing these sages. The result of such hearing is detachment from worldliness, so much so that even a small boy could receive the death news of his mother, who was his only caretaker, as blessing of God. ये क्या है? ये गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज श्रवण कीर्तन आदि सिंचन करे, ये और फिर अनर्थ निवर्ति वो सब चले गए, कूटनीति आदि. ये चेतना चैतन्य से लिखा हुआ है परपट. ठीक है? नाउ उसका अपना रिजल्ट बता रहे हैं. रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति, दैट मदर्स डेथ वाज ब्लेसिंग. And at once he took the opportunity to search out the Lord. A sincere urge for having an interview with Lord was also granted to him. It means he has a darshan of the Lord. He had a darshan of the Lord. Although it is not possible for anyone to see Lord with mundane eyes, he saw it. He also explained how by execution of pure devotional service one can get rid of fluctuation of accumulated work and how he transformed his material body into a spiritual body. ये नारद ने जो सब कुछ बता, सर्वम, this is the Prabhupada is commenting on only one word, सर्वम. The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of Lord.
and no one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. All the mysteries of transcendental are duly experienced by Narada Muni himself, and therefore by hearing such an authority one can have some idea of the result of devotional life, which are hardly delineated even in the original text of Vedas. In the Vedas and Upanishads there are only indirect hints to all this. Nothing is directly explained there, and therefore Srimad Bhagavatam is the mature fruit of all Vedic literature. So bhakti ki stages. Verse 37. Sutta Vacha. Evam sambhashya bhagavan narado vasvai sutam amantra vinam ranayam yayaho yadarichiko muni. प्रभुपाद का पर्पट है यदरिच्छा. यदरिच्छा के ऊपर प्रभुपाद जी का पूरा पर्पट है. यदरिच्छा मीन्स अपनी मर्जी से. अपनी मर्जी से मतलब फ्री, कोई ऑब्लिगेशन नहीं. So Prabhupada used word free, and he gives the example. There are three things which are yadricha, are independent, are free. और क्या है तीन, ये आपको नोट करनी इस पर्पट में, ठीक है. Sutta Goswami said, thus addressing Vyasadeva, Sri Narada Muni took leave of him, and vibrating on his veena instrument, he left to wander at his free will. Free will के ऊपर सारा पर्पट है. Amantra means taking leave. Yadrichya means that Narada moves about without motive. Bhakti is also radrichika, देखो दूसरा. And so is the devotee. ये तीन प्रभुपाद के पर्पट में ये तीन ही बातें हैं. Giving ascension to the Vyas is also yadrichika. Long live these three type of causeless concerning devotion. ये तीन क्या है, लॉन्ग लिव उसको लिखाया. लॉन्ग लिव दिस थ्री टाइप ऑफ कॉजलेसनेस कंसर्निंग डिवोशन. यहां तीनों को पक्का करो. प्रभुपाद जी के पर्पट में उसको ढूंढ के दिखाना क्या है. भक्ति इज यदृच्छिका, डिवोशनल एसोसिएशन इज यदृच्छिका, और तीसरा भक्ति, भक्त संग और devotee himself. Devotee is free, devotion is free, devotee association is also yadrishika, are free, are independent. ये तीन पक्का लिख लो. प्रभुपाद के पर्पट में इसको ढूंढ के दिखाओ. Every living being is anxious to full freedom, yadrishika, because that is his transcendental nature. And this freedom is obtained only through the transcendental service of the Lord. Illusioned by the external energy, everyone thinks that he is free, but actually he is bound up by the laws of nature. A conditioned soul cannot freely move from one place to other, even on this earth, what to speak of one planet to other. But a full-fledged free soul like Nath, always engaged in chanting the glories of God, is free to move not only on the earth, but also in any part of the universe, as well as in any part of the spiritual sky. We can just imagine the extent and unlimitedness of this freedom. Okay, which is as good as that of Supreme Lord. There's no reason or obligation for this traveling, and no one can stop him from his free movement. Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. ये हो गया दूसरा. पहला डिवोटी हो गया, अब हो गया डिवोशनल सर्विस. It may or may not develop in a particular person even after he undergoes all detailed formulas. मैंने भक्ति, आपके मंदिर में कितने लोग हैं जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, आपकी जैसे यही रह रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं डेवलप हो रही. सब वो चीजें अवेलेबल है लेकिन वो नहीं है इंडिपेंडेंट.
It's not easy. एक जमाना था कराची में, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, तो रोज स्ट्राइक होती थी, 6 महीना स्ट्राइक, 3 महीना स्ट्राइक, कॉलेज बंद। और बाहर कॉलेज के पुलिस की बड़ी कॉन्टिजेंट, पूरा कॉन्टिजेंट बैठी होती थी। तो एक दिन अखबार में आया, न्यूज़पेपर में, कि पुलिस वालों ने कहा हमको भी एमबीबीएस की डिग्री दो। बोला क्यों? बोला 5 साल से हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और ये भी पढ़ नहीं रहे, हम भी नहीं पढ़े, आए तो ये भी नहीं कॉलेज, कॉलेज तो बंद ही पड़ा था, तो इनको अगर डिग्री देते तो हमको भी दे दो। ये ऐसा है कि सबको नहीं भक्ति मिलती है, सबके सामने पड़ी हो लेकिन सबको मिलती नहीं। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी टू प्रैक्टिस भक्ति। इट्स आल्सो यदृच्छा। यदृच्छा की माना है बेसिकली, यदृच्छा मीन्स मर्सी ऑफ द लॉर्ड। यदृच्छा की माना है मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड मीन्स एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, and association of the devotee means accepting the instruction of the devotee. तब प्रैक्टिकल भक्ति का जन्म होगा। तो अब तीसरा ढूंढना है, देखो। Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. Similarly, the association of the devotee is also free. तीसरा, one may be fortunate to have it, or one may not have it, even after thousands of endeavors. Therefore, in all sphere of devotional service, freedom is the main pivot. Without freedom, there is no execution of devotional service. The freedom surrender to the Lord does not mean that the devotee become dependent on in every respect. To surrender unto the Lord through the transparent medium of spiritual master is to attain complete freedom of life. Yadrishya. Last verse of this chapter. Aho devarshi dhanyo yam yat kirtim sarang dhanva gayan majam tantrya ramayantya aturam jagat. अब नारद की महिमा गा रहे हैं। All glories and success to Srila Narada Muni, because he glorifies the activity personal to Godhead, and so doing he himself takes pleasure and also enlivens all distressed souls of the universe. This verse reveals astonishment. Tantra means with the veena. Veena se gungaan karna. Srila Prabhupada start purport. Shri Narada Muni plays on his instrument to glorify the transcendental activities of Lord and to give relief to all the miserable living entities of the universe. No one is happy here within the universe. What is felt is happiness as Maya's illusion. Illusory energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on filthy stool feels happy. No one can be truly happy within material world. Sri Narada Muni is, in order to enlighten the miserable and inhabitant wanderers everywhere, his mission is to get them back home, back to God. That is the mission of all genuine devotees of Lord, following the footsteps of great sage. Our 6th chapter is over. Now, you have any question or comment, or we just start chapter 7? Yes. When you were discussing the 3 types of bhakti, Huh? the 3 types of bhakti that you discussed, based on the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti. 3 types of bhakti, yes. So in that it is mentioned that the adhbhutta bhakti. Guna bhakti is not considered bhakti in Bhagavad. That's the question. In Bhagavad Gita, Krishna assures, "Svalpamapi yasya dharmasya." That is not
Mixed bhakti, pure bhakti is little bit. That's uttama bhakti, because recite this verse. स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, फिर क्या है? नेहा भी कर्म नाशो अस्ति। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि जो आपने इस जन्म में कर्म किया है वो आपके साथ जाएगा, नाश नहीं होगा। ये सब भक्ति में हो सकता है और किसी में शक्ति नहीं है। इट मीन्स दिस इज द ग्लिम्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति शुद्ध भक्ति का श्लोक है। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि one has performed 1% bhakti, next life he will start by 2%. Why? Because it is bhakti which is not destroyed, because it is शुद्ध भक्ति, it's not mixed bhakti. So when we talk about 1% शुद्ध भक्ति, भाई शुद्ध घी आप 1 ग्राम खाओ तो भी आपका हेल्थ ठीक रहेगा, और मिक्स घी आप आधा किलो खाओ तो भी बीमार होगे। इसका मतलब ये तो वो है एक्चुअली प्योर। ये जो सेकंड चैप्टर की श्लोक है ना, ये श्लोक है शुद्ध भक्ति की श्लोक, प्योर। 1% तो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती ना। शुद्ध भक्ति में तो 100%। नहीं, शुद्ध भक्ति 1%, देखो शुद्ध भक्ति 1%, 2%, 4%, 10% भी हो सकती है। तो जब हम गुणभूत भक्ति की बात कर रहे हैं तो अगर गुणीभूत भक्ति का मतलब क्या है कि हम जैसे दुनिया वाले लोग हैं, काम ही करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दीप करके आते हैं, थोड़ी भक्ति हो गई ना, वो भक्ति गुणी बुरा भक्ति। वो भक्ति क्या करेगी? उसके कर्म का फल दिलाएगी। भक्ति का फल नहीं मिलेगा, कर्म का फल दिलाएगा। उसको एडवांटेज मिलेगा ना, मंदिर आ गया, आके जैसे एक बार आ गए, दूसरे जन्म में काम नहीं आएगी वो ना, वो इस जन्म में कर्म का फल दिलाएगी बस। लेकिन हम तो ये बोलते हैं भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। वो दूसरी भक्ति, वो शुद्ध भक्ति सिर्फ। ओनली प्योर भक्ति इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय डेथ। ये गुणीभूत भक्ति तो कर्म का फल देने के लिए है सिर्फ, बस, इससे आगे कोई मतलब नहीं। कर्म का फल देने फिर भक्ति का फल नहीं देगी। बिना भक्ति के फल ही नहीं मिलेगा। भक्ति उसमें थोड़ी भक्ति ऊपर होगी तब फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। That is only just to get the result of the work, or gyaan, result of the gyaan, or result of the yoga. No result of bhakti. उसको भक्ति ही नहीं मानी गई है शास्त्र में। आपको अपेक्षा कर दिया है। उन्हें उसमें उसी में लिखा था, नीचे गुणीभूत भक्ति is not accepted in Bhagavatam as a bhakti. It is useless. The word was useless. नहीं, डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे करेंगे दो प्रकार की भक्ति है, प्योर और मिक्स। मिक्स दो प्रकार की है, प्रधानीभूता एंड गुणीभूता। गुणीभूता इज यूजलेस, प्रधानीभूता कैन टेक अस टू द शांत भक्ति और मे गिव लिबरेशन, इट कैन गिव लिबरेशन टू सम। हाँ जी, हाँ जी, उसमें गुण शब्द नहीं है, गुण है, गुण। गुण मीन्स भक्ति इज सेकेंडरी, गौण। प्रधान मतलब भक्ति इज मोर। प्रधानीभूता का एग्जाम्पल है ना, ज्ञान, जो भगवत गीता है वो प्रधानीभूता भक्ति, जिसमें भक्ति 80% है, 20% ज्ञान है सर। ज्ञान बहुत थोड़ा है जो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा, और एसोसिएशन से भक्ति प्योर हो जाएगी, वो रिजल्ट देगी। काम कर सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ आते हैं, मंदिर में नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन उनका मतलब कोई नहीं होता उससे, देखा देखी करते हैं। वो कोई कमिटमेंट नहीं है उनका कि रोज माला जपनी है। वो भक्ति का सहारा लेते हैं अपने कर्म के फल के लिए, ज्ञान के फल के लिए या योग के फल के लिए। उनके लिए भक्ति सिर्फ लाठी जैसा है, जैसे हमारे लिए लाठी है चलने के लिए, इससे ज्यादा काम नहीं है भक्ति को। ठीक है, हाँ जी। हम कैसे समझेंगे कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? हाँ, हम कैसे समझेंगे कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ये हमारे पास क्राइटेरिया है शुद्ध भक्ति का। अब हमको देखना है इसमें दो लक्षण है भक्ति के। एक को कहते हैं प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक और स्वरूप लक्षण, और एक कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण होता है उत्तम भक्ति को डिफाइन करने के लिए। इफ देयर इज नो सेकेंडरी कैरेक्टर देन भक्ति इज मिक्स। आप समझे मेरी बात? सेकेंडरी कैरेक्टर टू डिनोट द भक्ति इज उत्तम, उसके लिए जरूरी है। प्राइमरी कैरेक्टर का मतलब है कि वो नहीं है तो भक्ति ही नहीं है, वो नहीं होगा तो भक्ति है ही नहीं। तो भक्ति का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति का अनुशीलन करें। अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति का अनुशीलन करें, यह है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी है दो, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी भोग की इच्छा रेगुलर बेसिस पे नहीं हो। अभिलाषा नहीं लिखा है, अभिलाषिता लिखा है। नेचर ऑफ द डिजायर, अन्य अभिलाष शून्य। जैसे द्रौपदी ने भगवान को बुलाया था संकट में, वो भक्ति के विरुद्ध नहीं है। अभिलाषा थी, अभिलाषा थी, अभिलाषिता नहीं थी। रोज रोज ऐसे द्रौपदी नहीं करती थी, संकट की स्थिति में बुलाया था। इसलिए द्रौपदी शुद्ध भक्ति से के दायरे से बाहर नहीं है। लेकिन जो रोज जाके मंदिर में भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमको ये दे दे, वो है अन्य अभिलाषिता, वो शून्य होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसी अभिलाषा हो तो भी भक्ति उत्तम ही रहेगी। वो कौन सी अभिलाषा? एक उदाहरण दे रहे थे महाराज कि फॉरेनर भक्त आया वृंदावन में, फीस खाया, लोई बाजार में सामान लेने का, पेट में गड़बड़ बहुत हुई बाजार में, भगवान कमरे तक पहुंचा, तब तक रक्षा करना। ऐसा अभिलाषा से भक्ति खराब नहीं होगी। ये अभिलाषा नहीं, ये अभिलाषा नहीं, अभिलाषी, ये अभिलाषा है, अभिलाषिता नहीं है। इससे कोई भक्ति खराब नहीं होगी। ऐसी इच्छाएं जो स्पॉन्टेनियस है, रेगुलर नहीं है और बिना किसी मकसद के है, वो भक्ति के विरुद्ध नहीं। और दूसरा तटस्थ लक्षण है ज्ञान कर्मादि अनावृत, शून्य नहीं। वो ज्ञान जो ब्रह्म में लीन होने वाला है, वो उसका पर्दा नहीं होना चाहिए। वो कर्म जो स्वर्ग आदि के लिए, वो नहीं चाहिए। तो कौन सा ज्ञान चाहिए? भगवान का संबंध ज्ञान चाहिए। कौन सा कर्म चाहिए? पूजा की विधि का सारा कर्म चाहिए, आरती करने का कर्म चाहिए, रसोई पकाने का कर्म चाहिए। वो कर्म तो नहीं छोड़ना है। तो कौन सा कर्म छोड़ना है और कौन सा नहीं छोड़ना है, इसलिए अनावृत लिखा है, बात शून्य नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमको देखना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। वैसे हमारे अंदर सॉफ्टवेयर ही शुद्ध भक्ति का एस्टेब्लिश किया जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और शुद्ध भक्ति भी राग अनुगा मार्ग वाली एस्टेब्लिश की जाती है। मैनिफेस्ट भले देर से करें, लेकिन हमारी भक्ति शुद्ध है और राग अनुगा वाली है। जो हम रोज करते हैं हमें पता नहीं। रोज तुलसी पूजा करते हो ना, क्या कहते हो? कुंजदियो वास, ये राग अनुगा हुई ना। हम अनुगामी बने हैं तुलसी देवी का, वो तो भगवान की नित्य पार्षद है ना वृंदावन की। तो हम कर रहे हैं रोज, हमें मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक हम अनर्थ निवृत्ति पार नहीं किया है।
हमारा सॉफ्टवेयर यही डला हुआ है, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, वो मिल नहीं रहा है, सर्च में मिल नहीं रहा है। किसी का वायरस लगा गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर ठीक है, सिस्टम ठीक है, हमारी मशीन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन शिक्षा हमारी में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी प्रैक्टिस में डिफेक्ट हो सकता है। तो इस कृष्ण का भावना में गौड़ीय वैष्णव सॉफ्टवेयर रागानुगा साधन भक्ति का है, उत्तम भक्ति का है। हमारे पास मिक्स का कोई खिचड़ी नहीं। आजकल थोड़ा सा भक्तों ने ड्रामा चालू किया है, थोड़ा सा योग करते हैं, किस तरीके से बीमारी आई है कहीं से थोड़ी बहुत। कोई जरूरत नहीं, 1 घंटा आप कीर्तन में नृत्य कर लो, सब योग अपने आप हो जाएगा अगर कर सकते हो तो। फिर सेपरेट योग की जरूरत नहीं। लेकिन है, बहुत से लोग शुरू किया है। माया बहुत होशियार है, जैसे कलयुग बढ़ेगा और भी नए नए ड्रामे आएंगे। इतना आसान नहीं है ऐसे। और भाव भक्ति तो भगवान की दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, नहीं देते हैं आसानी से भाव भक्ति। अभी हमारे संस्था में कितने लोगों को प्राप्त हुई है, तो उंगली के ऊपर गिनने जितने भी नहीं मिलेगी भाई। भाव भक्ति के स्तर पे कितने भक्त हैं ये कहना बहुत मुश्किल। अनर्थ निवृत्ति में बहुत है, आदो श्रद्धा है, भजन के लिए चल रही, अनर्थ निवृत्ति में स्ट्रगल कर रहे बहुत सारे। रुचि निष्ठा, रुचि नाम जपने में रुचि आती है आपको? आई नहीं है, क्या करें, प्रसाद खाने में रुचि है बस। वो भी अच्छा है, कुछ तो है। रुचि का स्टेज भी नहीं आया है ऐसा देखा जाए। It is a serious matter actually. If we have to be more committed, we should desire to awaken. At least we have to reach to the nishtha. Then we can only practice Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti की प्रैक्टिस स्टार्ट ही निष्ठा से होती है। निष्ठा से पहले रागानुगा का प्रैक्टिस करना निषेध है, नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सहजिया हो जाए। और ईगरनेस होना चाहिए, लोलियम हो जाना चाहिए, वो तो है नहीं। हमें भगवान के वृंदावन के पार्षदों का अनुगामी बनना है, ऐसा लोलियम कहाँ है? लोलियम है ही नहीं। चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे को दूसरा अध्याय के कम से कम कुछ श्लोक आज दूसरे क्लास में पूरे करने हैं, 7वें के। कल 7वां अध्याय हमको पूरा करना है, तो फिर हमारे को 8वां अध्याय 2 दिन में पूरा करना पड़ेगा। तो आइए हम अब कौन सा अध्याय शुरू कर रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है, अच्छा इस अध्याय को पहले आपको ऐसे बताना पड़ेगा ना, दूसरा दुकान कहाँ गया, ये जाओ माई गया, आओ भाई आया, आ गया, हाँ 8वां आ गया, चलो 7वें को मंगाते हैं। आ गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। कैसे छोटा करें इसको? प्रेजेंटेशन मोड में, हाँ प्रेजेंटेशन मोड ये इसमें तो ये मेरा ड्रामा ऐसा होता है, ये बड़ा बड़ा एक मिनट इसको थोड़ा सीधा करो, ये पूरा आ जाए, ये पूरा आ गया। 7th 8th लगा नीचे, 8th लगा, 7th लगा दे, वो एक्सेप्ट करके बाहर लगा, 8th हो गया। ओके, 8 है तो 7वां बुलाना पड़ेगा।
शिखर वाला एक पहलवान। ओके, अब मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ से इसको ओके, ऑलराइट। स्लाइड शो भी लगा F5 तो मुझे सही कर रहे थे। मेरा गरीब सिस्टम ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, जो आने दो। हाँ जी, देखिए क्या लिखा है चैप्टर 7। श्रील प्रभुपाद ने टाइटल क्या दिया? सन ऑफ द्रोण पनिश। चक्रराज ने क्या लिखा है? पनिशमेंट ऑफ द अश्वत्थामा, सेम थिंग। और इसमें कंटेंट क्या है? व्यासदेव मेडिटेशन एंड विजन। पहले 7 श्लोकों में आगे बताएंगे। फिर है ग्लोरीज ऑफ भागवतम, that Sukhdev, who was already Brahma realized, he has studied 18,000 verses of Bhagavatam. Then the Sutta answer question about Parikshit. Why Parikshit retired? And then there is a punishment of Ashwasthama. This is the breakdown of the 7th chapter. There are 5 sections. First to 7 is Vyasadev's vision and glories of Bhagavatam. First, second and third is questions by Sanak Rishi about Vyasadev and answer by Sutta Goswami. Verse number 4 to 7, he means Vyasadev saw the Lord, Maya, and the suffering of the whole, and the Jiva, whose miseries will be mitigated by bhakti. Thus he compiled Bhagavatam. He has second. Talk in verse number 7. Then second section. Vyas teaches Bhagavatam to Sukdev Goswami. और ये है up till verse number 11. 8 and 9. Why did Sukdev Goswami, who was already on the path of self-realization, study Bhagavatam? The question is the answer. And the 10 and 11 describe even Atma Ram drive desire devotional service like Sukdev Goswami. And next 12 to 16 lamentation of Pandavas. क्या लिखा है? Lamentation for Pandavas, Pandavas dead sons. And next is 70 to 34, Arjun capture Ashwasthama. And the last is arguments regarding killing of Ashwasthama. तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। अभी पूरा है ना? हाँ? नेक्स्ट पूरा है ना उधर? मेरे पास भी बड़ा अच्छा है, कोई झमेला नहीं है। मैं इसको बता इस दुकान को ही बंद करते हैं, इसका काम हो गया इसका। Okay. Now we are starting the first section. Sonakvacha nirgate nade sutta bhagwan vadrayana shudvam stadavi pretam tadat kim karod vihu. Similar question as in verse 1, chapter 6, verse 1. After renunciation, what did Narad do? Vyas is asking. Now Sonak is asking, after Vyas was instructed by Narad, what did he do?
So Sri Shonaka Sutta, O Sutta, the great and transcendently powerful Vyasadeva heard everything from Sri Narada Muni. So after Narada departed, what did Vyasadeva do? भगवान वादरायण, इसको प्रभुपाद ने क्या लिखा है? ग्रेट एंड पावरफुल व्यासदेव. वादरायण मीन्स व्यास. In the 7th chapter, Vyas sees meaning of all scripture while in trance. The withdrawal of Brahmastra is a second subject matter, and third is punishment of Ashwasthama. These are the three subjects Chakravarti Pad says are discussed. Srila Prabhupada's purport. In this chapter, the clue for describing Bhagavatam is picked up as Maharaj Parikshit is miraculously saved in the womb of his mother. In this chapter, clue for describing Bhagavatam is picked up. What it means? Vyasadeva realized the need of Bhagavatam to mitigate the miseries of Jiva. And second, Parikshit is miraculously saved in the womb of Mother Putra. This was caused by Droni Ashwasthama, Acharya Drona's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjuna. Before commencing the great epic Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva realized the whole truth by trance and devotion. Prabhupada ne Mahabharata puri likhi hai, and you know this history, no? There's no need to describe the Mahabharata. Right? 5 sleeping sons of Draupadi from 5 brothers were killed by Ashwasthama. Kab? On the last day of the war. On the last day of the war, Shalya was the commander-in-chief for the Kauravas, and Duryodhana was by say almost only 4 persons were alive on Kaurava side. Drishtadyumna, Ashwasthama, Kripacharya, Kirtavarma, the commander-in-chief of the Yadu army, and Duryodhana, who was hiding in a lake. Only 4 were alive. On the side of Pandavas, 1 full Akshoni army, ek Akshoni Sena, same commander-in-chief Drishtadyumna was alive. Still he was alive. फिर क्या हुआ? फिर दुर्योधन को चैलेंज करके भीम ने बाहर निकाला और युद्ध किया और उसका कमर की हड्डी और थाई तोड़ दिया और वो आधा मरा हुआ पड़ा था. भगवान श्री बलराम जी भी वहां आए, कृष्ण ने उसकी रक्षा की. उस आधे मरे हुए दुर्योधन के पास ये 3 आए, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य. अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन आपने मुझे अगर सेनापति बनाया होता तो मैं मेरे पिता का प्रतिशोध लेता, पांडवों के गर्दन काट के लाके देता आपको. दुर्योधन का अभी क्या गया है, अभी मैं जिंदा हूं, ये लो अपने खून को उठाया, तेरे को देता हूं. तिलक तुम बन जाओ सेनापति, मार के आओ पांडव, बोल दिया. तो क्षत्रिय का खून ब्राह्मण के मत्थे के ऊपर लगा. ये तीनों चले गए, एक पेड़ के नीचे रात को बैठ गए. उस पेड़ के ऊपर कोई हजारों पक्षी बैठे थे.
अचानक एक उल्लू आया, सारे पक्षियों को मार गिराया। अश्वत्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली, क्योंकि वो ब्राह्मण के सर के ऊपर क्षत्रिय का खून लगा तो उसको उल्लू से प्रेरणा ली। रात को सब सोए हुए हैं ना, एक उल्लू सबको मार सकता है, तो मैं अकेला क्यों नहीं सारी एक अक्षोणी सेना को मार सकता हूं पांडवों की। इसने निर्णय लिया, चलो मैं सेनापति हूं। उन्होंने कहा ये तो धर्म युद्ध में रात को थोड़ी युद्ध करते हैं सोए हुए के ऊपर। बोलो तुम अंदर मत जाना, अंदर मैं जाऊंगा, जो भागे बाहर उसको आप मार देना, वो सोया हुआ तो नहीं होगा, आप भले बाहर खड़े हो। ये डिसाइड हो गया। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वो 5 पांडवों और सात्यकी 6 को लेकर किसी और जगह सो गए रहे रात को। कृष्ण ने कहा जब राजा की विजय हो जाए तो अपने शिविर में नहीं होना चाहिए, कोई षड्यंत्र हो सकता है लास्ट मोमेंट, सो वी विल नॉट स्टे हियर टुडे, अलग कहीं ले गए। अब रात को अश्वत्थामा आया और अंदर पहले दृष्टुम्न को उनको मारा, घसीट घसीट कर, फिर 5 द्रौपदी के पुत्रों को गर्दन काटा और सब सेना को मारे, तहस नहस करके कुछ भी नहीं बचा। वो 5 उनका सब लेके दुर्योधन के पास चला गया। तो ये उसकी बात की प्रभुपाद वो कथा कर रहे हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट के उसने जाके दिया किसको? दुर्योधन खुश हो गया, अच्छा हुआ मेरे दुश्मन को मार दिया, मैं तो मर रहा हूं लेकिन दुश्मन भी जो बचा नहीं ना। उसने ऐसे टेस्ट करने बोले लाओ लाओ सर लाओ, ऐसे सर को ऐसे करके ऐसे पिचकाया, वो तो कचूपर हो गए। अरे बोला ये पांडवों के सर नहीं हो सकते। ये भीमसेन के सर के ऊपर गदा लगती थी तो भी ठन ठन का आवाज आता था, टूटा नहीं। ये मेरे हाथ से कैसे पिचक गया? किसके सर है? बोला द्रौपदी के पुत्रों पे। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को, सोए हुए बालकों को मारने का मेरा घिनौना कार्य है, तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। दुर्योधन को शराब था, हर्ष और शोक साथ होगा तब प्राण निकलेंगे। पहले खुश हुआ फिर दुख हुआ, इसलिए मर गया। दुर्योधन का तो शरीर छूट गया। अब अश्वत्थामा इस बालकों की हत्या के कारण, भय के कारण भाग रहा है, ये कथा आएगी। और सुबह उठ के अर्जुन आता है तो विलाप करते हुए द्रौपदी को देखता है, ये कथा इतनी इसमें आएगी। तो ये इस कथा का बैकग्राउंड है, ठीक है। अब दूसरा श्लोक पर सुतवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे समाप्यासंया प्रासिति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां, ब्रह्म नद्यां अलग है, देखो सरस्वती अलग है। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। अब शब्दों को देखें, जब लगता है ऐसे है कि सरस्वती नदी सिर्फ है, नहीं, ब्रह्म नदी एक शब्द है, सरस्वत्यां अलग शब्द है, देखना है ना। और आश्रम पश्चिम तट है, पश्चिम तट पे सरस्वती नदी के एक आश्रम है, उसका नाम है सम्याप्राश। और ऋषि नाम सत्रवर्धनम, वहां हरि कथा करते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि महाराज उधर के महात्मा रहते हैं, बड़े बड़े कथाओं के सत्र चलते रहते हैं। अब इसमें ये देखिए, ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती व्हिच इज इंटीमेटली रिलेटेड विद द वेदास। ये देखो क्या इंटीमेटली रिलेटेड, वेदास किसके लिए शब्द है? ब्रह्म नद्यां। ब्रह्म मतलब वेद, ये ट्रांसलेशन में शब्द है ना, रिवर सरस्वती व्हिच इज इंटीमेटली रिलेटेड विद वेदास। वेद, ब्रह्म पहला जो शब्द है उसका अर्थ है वेद। देयर इज अ कॉटेज फॉर मेडिटेशन एट सम्याप्राश व्हिच एनलाइन्स द ट्रांसलेशन एक्टिविटीज ऑफ द सेजेस। सत्रवर्धन। अब देखिए ये चक्रवर्ती पाद अर्थ लिख रहे हैं ब्रह्म नद्यां का। ब्रह्म नद्यां कैन मीन रिवर ऑफ द वेदास, ऑफ द ब्राह्मणास, दूसरा माना, ऑफ द ऑस्टेरिटी ऑफ द लॉर्ड,
Amarkos says Veda Tattvam Tapo Brahma Brahma Vipraha Prajapati. The word Brahma can mean Veda, truth, authority, Brahma, Lord, Brahma and Brahman and progenitor. इन सबको ब्रह्म के इतनी माना है। इसमें प्रभुपाद ने कौन सी माना उठाई है? वेद। वेद व्यास वहां रहते थे, इसलिए वो स्थान वेदों का है। वेद व्यास का वहां आश्रम है। प्रभुपाद लिखते हैं, फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज suitable place and atmospheres are definitely required. The space on the western bank of Saraswati is especially suitable for this purpose. And there is an ashram of Vyasdev at Samyaprash. Shri Vyasdev was the householder, yet his residential place is called ashram. An ashram is the place where spiritual culture is always foremost. It does not matter whether the place belongs to householder or mendicant. The whole one ashram system is called ashram. प्रभुपाद एकदम आश्रम को वर्ण आश्रम में लाए। यहाँ अभी तक प्रभुपाद जी जो ये परपट लिख रहे हैं, किस शब्द के ऊपर लिख रहे हैं? ब्रह्म नद्याम सरस्वती पश्चिम तटे। सरस्वती का पश्चिम तट बहुत अच्छा स्थान है। किसके लिए? साधन के लिए। वेद व्यास ने वहां बैठ के महाभारत लिखी है। वेद व्यास ने वहां बैठ के भागवत को लिखा। भागवत और महाभारत दोनों वेद व्यास ने इसी आश्रम में बैठ के लिखे। आप में से कोई गए हैं? कुछ लोग बहुत माना में व्यास देव की गुफा में गए हैं? बहुत से भक्त जाते हैं। आप में कोई नहीं गए क्या इधर? अरे मैं तो अभी निर्जल एकादशी पे उधर था। वो बद्रिक आश्रम में एक जगह है जहाँ सरस्वती नदी दिखती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो अलकनंदा में मिल जाती है केशव प्रयाग में। तो जहाँ सरस्वती का फिर पश्चिम तट पे व्यासदेव की गुफा है, जिसमें व्यासदेव बैठते थे। उसके नीचे गणेश जी की गुफा है, जहाँ गणेश जी ने बैठ के वो महाभारत लिखी थी। व्यासदेव ने लिखाई थी और उन्होंने लिखी थी वहां बैठ के। तो ये दो गुफाएं हैं, उधर व्यास गुफा और गणेश गुफा, और दूसरे तरफ सरस्वती नदी है। और ये पश्चिम तट के ऊपर ये स्थान है। एक साल आज से मेरे ख्याल में हो गए 7-8 साल पहले हो गए होंगे। हम निर्जल एकादशी हमने वहाँ बहुत बार की है। वहाँ कोई 7-8 बार निर्जल एकादशी बद्रिक आश्रम में करने के लिए जाते हैं। पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडा इतना होता है पानी पी नहीं सकते। और एकादशी उत्पन्न भी वहां हुई है। वहां बद्रिक आश्रम में जैसे हम एंटर करेंगे राइट साइड से एकादशी का प्रकट स्थल है, एकादशी गुफा है वहां जहाँ एकादशी प्रकट हुई। अगले साल से कोशिश करेंगे हम हर साल जाते हैं, लेकिन अब हमारा शरीर इतना नहीं मान रहा है। लेकिन अभी भी हम गए थे और टेम्परेचर -2 था, -2। सारी बर्फ आ गई थी रात पहाड़ों पे। हाँ, डबल रजाई और हीटर था। फिर भी सांस की तकलीफ हमको होती है, सबको नहीं, हमारी भी तकलीफ है। सो एक बार हमें याद है, हम पंचशील के भक्तों के साथ उधर गए थे जब, तब इसको द्वारा चालू नहीं किया है। वो क्या करेगा? कुछ नहीं किया इसने, ऐसे ही। मुझे मालूम है चालू नहीं किया था मैंने। मैं खुद करता हूँ उतना ही काफी है। ये इसमें बड़ी तकलीफ है, मेरे सामने होता है, मुझे मालूम है क्या करना है। मैं 2 बार ऊपर गया हूँ गुफा कूद के, 10 बार गया हूँ तो बाद में जाता नहीं, चढ़ के थोड़ा मुश्किल है चढ़ना होगा। तो उस दिन निर्जल एकादशी खोल के
पानी पी के फिर आस्ते आस्ते मैं गुफा के ऊपर जाके बैठा। सारे भक्त आए, हमने भागवत क्लास फिर वहाँ गुफा के बाहर बैठ के भागवत क्लास की। और पत्री प्रभुपाद को लेके सीधा गुफा में गए थे। गुफा तक प्रभुपाद जी को ले गए थे और प्रभुपाद जी को उस गुफा में मूर्ति को स्थापित करके प्रभुपाद का भागवत रखा जाए वहाँ। ऐसा कहा कि इस वक्त भागवत जो व्यासदेव ने यहाँ लिखी है पूरी दुनिया में, तो प्रभुपाद जी का भागवत का ही प्रचार हो रहा है, तो वहाँ रखा जाए कि लोग आके देखें। सब लोग जाते हैं अंदर। तो ये वो जगह है जहाँ भागवत प्रकट हुई। और ये रोज हम जो पढ़ते हैं नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं, तो ये उसी जगह का मेडिटेशन है। वहाँ बद्रिक आश्रम में नर और नारायण है। नारायण नमस्ते नरम चैव नरोत्तमं, वो दोनों उधर है। सरस्वती नदी वहाँ है, व्यासदेव वहाँ है, और वहीं भागवत प्रकट हुई है। तो ये श्लोक पढ़ने का मतलब उस जगह को आप देख रहे हैं, उस जगह की मेडिटेशन है ये श्लोक। तो ये उस आश्रम की बात हो रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सब आश्रम है। Therefore, none of them are less or important as far as spiritual concern is concerned. चारों आश्रम इंपॉर्टेंट है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। तो फिर सन्यासी को ज्यादा क्यों कहते हैं? ये लिखा है, the difference is matter of formality on the strength of renunciation. Sannyasis are held in a high estimate because on the strength of practical renunciation. क्योंकि वो त्याग करते हैं इसलिए उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और नहीं त्याग करेंगे तो सब समान है। वर्ष 3, तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री षण्ड मंडिते आसीनो उपशिष्य प्रणिधायो मनः स्वयं। तस्मिन् मतलब उस जगह पे, स्व आश्रम में मतलब व्यासदेव अपने आश्रम में, जिसको क्या क्या नाम है आश्रम का? संप्रायशन। उसकी व्यासदेव उस जगह की विशेषता क्या है? बद्री षण्ड मंडिते। बद्री मतलब बेर के पेड़, षड मंडिते का मतलब वहां बेरी की ट्रीज चारों ओर। अभी कुछ नहीं है वहां, पहले बेरीज की ट्री थी। ये बेरी बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? हाँ, इसी के नाम का बड़ा बादरायण। बादरायण का मतलब बद्री, जहाँ बद्री के पेड़ है वहां रहने वाला। उसके आसन पे भी जो बैठते हैं, जैसे कहते नारायण जहाँ पानी है, नर में रहे वो नारायण। ऐसे बादरायण का मतलब जब बद्री के पेड़ों के बीच में रहे वो बादरायण। ऐसे गुड आइडिया। हाँ, आरण्य का मतलब है गार्डन। आरण्य मतलब रहने की जगह। जैसे रामायण वो अरण्य अलग है, अरण्य मीन्स फॉरेस्ट वो अलग है। ये है बादरायण। बादरायण मतलब व्यासदेव के रहने की जगह। नहीं, मैं कहना ये जाता, बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? भगवान नर, बोलिए। हाँ, नर नारायण तपस्या का अवतार है। क्या नाम है नर नारायण की माता का, पिता का? 12वें स्कंद में है, मूर्ति और धर्म के पुत्र। मूर्ति और धर्म के पुत्र है भगवान नर नारायण ऋषि। तो वो तपस्या कर रहे थे, तो लक्ष्मी बेर का पेड़ बनके उसको छाया और फल दे रही थी। तो भगवान ने कहा जैसे मुझे लक्ष्मी नारायण कहते हैं और मुझे बद्री नारायण कहेंगे। तो बद्री लक्ष्मी उस क्षेत्र में बेर के पेड़ के रूप में रहा करती थी, जो आज नहीं है। इस वक्त कोई लक्ष्मी वहां बेर का पेड़ नहीं है। आसीनो, आसन के ऊपर बैठे व्यासदेव। आप स्पर्श का आचमन किया। आपका मतलब जल, स्पर्श का मतलब छूना, जल को छूने का मतलब आचमन करना, इसको आचमन करना मानना।
प्रणिधायो मन स्वयं, प्रणिधायो का मतलब ध्यान में बैठे अपने मन को एकाग्र किया। व्यासदेव मन को एकाग्र करके बैठे। ये देखिए यहां लिखा है, नारद had instructed Vyas to remember the pastime of Lord continually in samadhi. Thus he sat and concentrated using his mind. Under instruction of his spiritual master Narada Muni, Vyasadeva concentrated his mind on that transcendent place of meditation. और प्रभुपाद ने क्या लिखा है? In that place, Vyasadeva in his own ashram, which was surrounded by berry trees, sat down to meditate upon by touching the water for purification, which means आचमन। उन्होंने लिखा है आचमन सीधा। तो यहाँ आज की अभी का सत्र पूरा करते हैं, शाम को चौथे श्लोक से आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। अब फोर्थ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ उससे इंपॉर्टेंट है, सिक्स उससे और सेवन उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। साउंड बिल्कुल नहीं आया, बंद होगा। नहीं, साउंड इससे आ रहा था। हाँ, निकाल रहा है।